Hey guys, this is Saurabh. Welcome to Python Project YouTube channel. In this channel, you got many interesting Python project as a beginner. So इस वीडियो में हम लोग डाइस सिमुलेटर का प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि व्हाट इज मॉड्यूल वाला वीडियो जरूर देखें, बिकॉज अगर आपको मॉड्यूल पता है देन आपको इस वीडियो में और बाकी सारे वीडियो में आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे. मैं व्हाट इज मॉड्यूल वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. So let's start this video. Before start this video, I'm going to give you a real life example. I'm 99% sure जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने होल लाइफ में ऑनलाइन लूडो गेम खेला होगा. Yes, I repeat, लूडो. I think लूडो किंग इज मोस्ट पॉपुलर. तो उसमें जो डाइस थ्रोन करने का टैब रहता है ना, जब भी हमारा चांस आता है तो हम उस पर क्लिक करते हैं और वो रैंडम नंबर जनरेट करता है 1 to 6 तक. एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी वी आर वेटिंग फॉर 6. तो ये जो नंबर जनरेट करता है ना, उसके पीछे का कोडिंग और यू कैन से दैट लॉजिक आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. So let's start the coding work. We have to open a ideally moment. I'm going to open the PyCharm. So एक नया फाइल बनाते, नया पाइथन फाइल. नेम कुछ देते हम लोग, लेट्स डाइस सिमुलेटर. और ये हमारा फाइल बन गया. रैंडम इंपोर्ट रैंडम. इस प्रोग्राम में एक एडवांटेज है कि हमें कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. और ये जो रैंडम मॉड्यूल है ये बिल्ट इन मॉड्यूल है. इट मींस पाइथन जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तभी ये उसके साथ में इंस्टॉल हो जाता है. सो लेट्स प्रिंट वेलकम मैसेज. प्रिंट, which is totally optional, but we have to write for presentation. Welcome to rolling dice simulator. Let's take choice from user, want to roll or not. So we have to give a one variable choice and input. User want to roll or not. Roll the die. Yes or no. So we have to take one while loop, while, and this let's choice equal to yes, and it means y. Then we have and let's take range and num variable equal to random dot random, and here we are taking 1 to 6. So while loop we are taking if loop, num equal to 1
then print this, again print, okay, and again print, print. And copy paste from 6 times, copy, paste, paste, 1 2 3, paste 4 5 6 times, and here we are changed to elif. To 5, and here we are taking else, and user don't want to roll the dice, then take a choice. Let's copy from here. And paste in while loop. Then take if loop. Choice. Then exit. And here this is done our dice simulator program. So let's run this program. Yes, we want to roll die. Y. This is 3. Y. 3 again. And yes, it's 2. And if don't want to roll die, N as in no. Yeah, this is finished the code. So thank you so much. I hope you enjoy the session. So that's it from this tutorial. I hope you enjoyed this session. Thank you so much.